Welcome to week 5 of online lectures on digital logic design. I'm Dr. Khurram Naveed and I'm going to be your instructor in this lecture. So in this lecture, we are going to learn behavioral modeling of logical circuits using hardware description language, where we are going to see a few examples of combinational as well as sequential circuits developed using behavioral modeling. So in behavioral modeling, instead of implementing the logical circuit, we described um the behavior of the logical circuit in order to implement it using the Verilog code. So behavioral models generally use this always block uh, that is uh, um, that works like a while loop. Just like the while loop that has some condition that controls the number of time these statements within the parentheses will be executed. An event control expression um, is given in the always block that also controls the number of times the Verilog statements will be executed within this block, right? Um, also, this the outputs of the always block are generally specified using this reg type, where uh, this type of memory locations generally retain the previous states until the next state arises, right? So also it is important to specify that this event control expression is generally optional. In case it is not there, it means the always statement will be executed infinite many times until the device is turned off. Just like the while one statement that executes infinite many times and continues until the device is turned off. So, so now let's see an example where we develop behavioral model code for a 2 to 1 line multiplexer. Suppose this input is A and this is input is B, and this selection line is denoted by select, and this output is M out. So मैं ये inputs और outputs को चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो मैंने यहाँ पे सिंबल्स यूज़ किए हुए हैं ये उनसे बिल्कुल दे आर मुताबिकत हो इसमें, दे मैच एक्चुअली, राइट? तो फिर हम क्या करेंगे, आउटपुट का जो ये कीवर्ड है इसके थ्रू हम स्पेसिफाई कर देंगे कि इसमें से जो एम आउट है वो आउटपुट है, ए बी और सेलेक्ट जो है वो इनपुट हैं, जो रेज की कमांड है ये हम इससे हम आउटपुट को एक रजिस्टर बना देंगे, और जो ऑलवेज का ब्लॉक है इसके अंदर फिर हम जो जो कंडीशन है जिसके ऊपर दिस ब्लॉक शुड बी एग्जीक्यूटेड वो स्पेसिफाई करेंगे। और इस केस में अगर आप देखें तो प्राइमरीली ये कंडीशन है सेलेक्ट। जब सिलेक्शन लाइन चेंज हो तब ही इनपुट की सिलेक्शन चेंज होगी, सही है? सो अगर पहले ये थी और सिलेक्शन लाइन चेंज हो गई है, सिलेक्शन लाइन सेलेक्ट वन हो गया, तो नाउ ये इनपुट स्विच होनी चाहिए। तो इस स्विच करने के लिए वी नीड टू रन दिस ब्लॉक। लेकिन अगर फर्ज करें वी हैव अ सिचुएशन वेयर ए एंड बी आर आल्सो एक्साइटेड, और उस केस में हमें जो भी इनपुट आई है वो उस इनपुट को यहाँ पे ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए भी हमें ऑलवेज ब्लॉक को चलाना ज़रूरी है। इसलिए तीनों इनपुट्स जो हैं वो कंडीशन बन जाएंगी ऑलवेज ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए इस केस में, ठीक है? जिसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास वी हैव दिस ऑलवेज ब्लॉक वेयर वी हैव स्पेसिफाइड दिस कंडीशन टू एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक, और अब हमें we have to implement the functionality of this this um, logical circuit.
जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो बिहेवियरल मॉडल है, इसमें हम जो लॉजिकल सर्किट है वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम बिहेवियर स्पेसिफाई करते हैं किसी भी सर्किट का। तो अगर आप इस मक्स को देखें तो इस मक्स के अंदर जो सर्किट है वो ये है। So this is select, right? This is A and this is B. So when select is 0, it means B will be selected. So जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, B क्यों सेलेक्ट होगा, बिकॉज ये तो सेलेक्ट 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, जो भी इस पे इनपुट आएगी आउटपुट पे 0 ही रहेगी। यहाँ पे क्योंकि 1 होगा तो जो भी B पे इनपुट आ रही है वो आगे यहाँ जाती जाएगी और वो ज़ाहिर आउटपुट पे आ जाएगी एम आउट पे। ठीक है, इसी तरीके से जब सेलेक्ट 1 है तो अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा तो इसका मतलब है कि ए विल बी सिलेक्टेड, और तो इसका मतलब है आउटपुट पे, क्योंकि यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा और बी सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट पे बी चाहे जो भी आउटपुट पे 0 आता जाएगा, तो ए पे जो आउटपुट है वो यहाँ एम आउटपुट पे आती जाएगी, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सो दिस इज द सर्किट दैट इज इम्प्लीमेंटेड इन दिस ब्लॉक। बट जैसे मैंने कहा, वी आर नॉट कंसर्न विद दिस सर्किट, सही है। जस्ट टू शो यू कि हाउ बिहेवियरल मॉडलिंग वर्क्स, यहाँ पे मैंने ये सर्किट प्लॉट किया ताकि आपको पता लगे हाउ irrelevant this circuit is in behavioral modeling, because we are not concerned with the circuit, we are only concerned with the functionality। और फंक्शनैलिटी ये है इस ब्लॉक की कि जब सेलेक्ट 0 है तो बी सेलेक्ट हो, और जब सेलेक्ट 1 है तो ए सेलेक्ट हो, राइट। तो सिंपल चीज़ सी इस फंक्शनैलिटी है, तो वो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, सही है। तो वी डू नॉट केयर व्हाट इज द सर्किट इटसेल्फ, वी ओनली केयर अबाउट द बिहेवियर ऑफ दिस सर्किट। इसका मतलब ये हुआ कि जब सेलेक्ट 1 है तो ए सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है इफ, सो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाएं आप। so you write if say select is equal to 1, which is an equal statement in um, Verilog logic. So in that case the input A should be at the output, right? और दूसरे केस में when select is 0, और जो कि else स्टेटमेंट से इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो उस केस में B should be assigned to the output। और ये है, this is an assignment statement, right? तो इस तरीके से हम बिहेवियर डिस्क्राइब करते हैं इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द लॉजिकल सर्किट। नाउ वी लुक at a more comprehensive example where we implement a 4 to 1 line multiplexer which has 4 inputs: input 0, input 1, input 2, input 3, as you can see here, denoted using these symbols in 1, in 0, in 1, in 2, and in 3. And it has two selection lines, S0 and S1, which are denoted using a select vector which has 2 bits. So a vector is generally specified like this, where first we specify the number of bits. So in this case we have 2 bits. So whenever we are going to specify a value for select, we are going to specify it like this: 2, and then the type, and that is binary in this case, so B, and then the value. So in this case, say if the value is 0 0, so this is how we are going to assign this input to the select input, right? So if the input is 0 1, in this case it will be specified like this, right? So it is important to know that first you specify the number of bits,
then you specify the type, and then you specify the value. So it is basically a 0 1 of binary, right? Okay, so once we have specified the inputs and outputs, so output in this case is m out, and it is of type rec, if you look at it, right? So now you specify the condition of execution of always block. So as we have previously discussed, so in this condition you will have all the inputs, as you can see here, along with the select, which is the primary condition of this, the condition to run this always block, right? So now we will specify the behavior. Um, so if you look at it, so when selection line is 0 1, sorry 0 0, so in this case this 0 will be the line, input line 0 will be at the output. So as you can see, when the select input is 0 0, the case of select input being 0 0 will mean the output m out is equal to input 0, right? So जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, तो ये केस स्टेटमेंट है, जो कि मेरे ख्याल से जो C में we use it using the switch statement. We perform the similar functionality using switch statement, जिसमें आप की कंडीशन होती है यहाँ पे, और फिर केसेस होते हैं, केस से 0, केस से 1, या केस A, केस B, या जो भी आप उसको स्पेसिफाई करना चाहें। सो ये केस स्टेटमेंट यहाँ पे वही फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही है। So first you specify this case, you write this keyword case, and then you specify the condition. So in this case, the input select line input is going to be the condition to switch the input lines at the output. So select जो है वो itself condition बन जाएगा। तो जब select 0 0 होगा, तो उस केस पे आपकी जो output है m out, it will be input 0, and in case where the select is 0 1, the input 1 will be at the output. Just like it is described here, और इसी तरीके से जो बाकी दो selection lines की possibilities हैं, उस पे आपकी functionality describe हो जाएगी आपके इस block. So this is how we describe the functionality of a 4 to 1 line multiplexer using case statement. Of course, you could use the if else statement instead of the case statement, but it is more easy, or rather much easy to use the case statement, right? So this is how we describe the behavior model, behavior of the combination circuits using the always. But always statement is more relevant to the sequential circuits, because in sequential circuits we have clocked uh, uh, we have circuit elements which are required to be executed at either the positive edge or the negative edge of the clock. So suppose this is the clock. So this transition from 0 to 1 is the positive edge, and this transition from 1 to 0 is the negative edge, right? So in Verilog we have this keyword pos edge that denotes the transition from 0 to 1, and this neg edge that denotes the transition from 1 to 0, right? So generally we specify uh, this keyword along with the clock or any other input to start the execution at that transition, right? So um, so let's discuss an example. Let's first let's try to um, implement the D flip-flop using the always block. So because it is the D flip-flop is the key unit of the sequential circuits that we have learned to develop in this course as yet. So um,
But before we develop the D flip-flop, let's first develop the D latch. So in latch we have, in a D latch we have an input D and an output Q and another input that is enable. So so these are the three inputs and outputs. So this Q is the output, which we specify using this keyword output, and the inputs in this case are D and enable, and we already know that we need to specify the output as reg type. So we have already done it here, right? So once we have done this, now we need to specify the behavior of this D latch, right? So this is a D latch. This symbol denotes a D latch, right? So a D latch we know is a transparent latch. So whatever we have at the input will be assigned to the output, right? So so in this always block, we uh, uh, and in order to do that, we need to have this enable to be. So this enable should be one um, when we assign the input D to the output, right? So in that, so therefore we specify this if statement, that if say enable is 1, so if enable is 1, only in that case uh, D will be assigned to Q, where this assignment statement is a specific type of assignment statement that is able to retain the previous state of Q while assigning the D um, uh, as the next state of the Q, right? Okay, and as you can see, the condition that we have used to execute always is not only the enable but also the D. So whenever we have any of these inputs um, uh, excited to 1, we execute the always block, right? So this is how we implement the D latch, right? And now let's see how we can program the D flip-flop. So in D flip-flop we have a clock as an input and a D. So the D and clock are the input and Q is the output, as you can see here, and Q is specified as the reg type. So now in this case, whenever the clock is 1, so whenever we have this transition, so in this say positive edge triggered clock, positive edge triggered D flip-flop, the whenever this transition of the clock from 0 to 1 occurs, the input at the D should be assigned to output Q, right? So there is no need to have this additional if statement in this here, right? So this condition at the for excitation of the always block is enough to execute or um, to to implement the functionality of a D flip-flop, right? So whenever we have a positive edge of the clock, D will be assigned to Q, right? So this is how we implement the D flip-flop. Now let's see other how we can implement other um, flip-flops जिसमें ये टी फ्लिप फ्लॉप आ गया है। डी फ्लिप फ्लॉप से मिलके बना होता है। उसमें जो भी क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी आउटपुट इनपुट है डी, वही आउटपुट हो जाएगी नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे। तो so if we can estimate the what the uh, this input D, then we can implement this D flip-flop using the D flip-flop we have just made, right? So D in this case is um, uh, obtained by XORing T with the output Q, right? Right. So इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो भी आउटपुट है, जो प्रीवियस स्टेट है आपके डी फ्लिप फ्लॉप की, उसके साथ आप टी को एग्जॉर कर लें, तो वो इनपुट
जो है वो अगर आप डी फ्लिप फ्लॉप को दे दें तो देन यू कैन यू हैव अ टी फ्लिप फ्लॉप, राइट? So so here, as you can see, first we assign the inputs and outputs. In fact, we define the inputs and outputs. In this case, we have a wire, a temporary output that we need uh, to implement this equation. As you can see, Q XOR T, और फिर हम ये dt जो है इसको इनपुट दे देते हैं to our D flip flop that we developed in the previous part of this lecture. उसमें एक चीज़ ये थी कि आपका जो हमने शायद नाम रखा था वो D_FF था, और उसमें रीसेट की जो ये इनपुट थी ये नहीं थी, बट मे बी दिस इज एन अ मोर इवॉल्व्ड डी फ्लिप फ्लॉप जिसमें एक रीसेट की कंडीशन भी है. So but let's just ignore this. We assume that we have already developed this flip flop, और फिर हम इस फ्लिप फ्लॉप इस मॉड्यूल को डी फ्लिप फ्लॉप का जो मॉड्यूल है इसको वी यूज़, और उसको यूज़ हम कैसे करते हैं? वी असाइन अ लेबल टू इट एंड वी देन असाइन इनपुट्स, और जो इनपुट इसमें है वो एक तो क्लॉक है, दूसरा जो डी में इनपुट जा रहा है, और डी में इनपुट क्या जा रहा है? क्यू एक्सॉर टी, वो आ गया, और दूसरा फिर क्यू द आउटपुट. ठीक है. So now this is how we can develop T flip-flop using D flip-flop using the behavioral modeling. And now this is another example where we develop a JK flip-flop. So in JK flip-flop, the D is the input D, since this also uses a D flip-flop. So input D is equal to J Q and Q dash plus K dash Q, right? So we need to implement this equation. So we have done exactly that here using the assignment statement or the assign statement. और फिर ये जो JK है जो हमने यहाँ पे पहले कंप्यूट किया है उसको हम अपने D फ्लिप फ्लॉप में इनपुट दे देते हैं एज एन इनपुट D, और जो लेबल है इस यहाँ पे हमने जो लेबल यूज़ किया इट इज़ JK1. सो इट इज़ आपको याद होगा व्हेन वी वर डेवलपिंग द स्ट्रक्चरल लेवल कोड्स जिसमें हम एंड और नॉट की कमांड यूज़ कर रहे थे, उसमें भी हम लेबल्स देते थे जब हम मॉड्यूल्स को यूज़ करते थे. तो यहाँ पे भी यूँ समझे ये वही चीज़ है. आपको लेबल जब आप, क्योंकि you may be required to use this DFF module multiple times, so every time you use it you assign a different label to it, right? So so this is how we implement JK flip-flop, right? So now that we have learned to make the basic sequential circuit elements, that is flip-flops and latches, so now we can move to implementation of sequential circuits where generally two uh, models are used, the Mealy model and the Moore model for finite state machines. And finite state machines are basically the the um, so finite state machine basically describe how the states are flowing, right? uh, with change in input and output, right? So in Mealy machine, the output combination logic or the output states are generally dependent on the present states and the input, present states and the input, right? So we know the states are a function of the clock. But this input is not a function of the clock. So this input might change without like when the
the clock is active, right? So in this case, if so, in the clocked circuits are only executed either at the positive edge or at the negative edge, to avoid multiple executions uh, of a circuit element during the clock, right? But this input might change uh, in any instance where this clock is active, and in that case this output combination logic might change even um, when there is no positive edge or the negative edge, right? So this is the challenge in Mealy machines, but because its output combination logic is dependent on the input or inputs. But in case of Moore machine, the output is only dependent on uh, the states of the flip-flops. So or rather the output of the flip-flops are actually the output of the Moore machine, right? So this is the difference between the two models, where in this case the input of the system of the circuit is not used to uh, to obtain the output combination logic. So this implements a uh, synchronous activity, while this may be asynchronous, right? So um, so let's see how we can implement these two different state machines. So now we develop behavioral models for a Mealy state machine. Um, so in this case, we have two flip-flops. That means we have two states, and we have a combinational input combination logic and an output combination logic, which is given here, and it is uh, also uh, plotted here for reference, right? So, so in behavioral modeling, we generally implement the behavior of the sequential circuit instead of implementing the sequential circuit. So the behavior of the sequential circuit is defined by this state machine or this state flow diagram, right? So we use three different blocks to implement this behavior. Three different always blocks, right? But before discussing these always blocks, let's first define the states and the inputs. So so we have this output y out, three inputs, x in the clock and the reset, and apart from that we have two states a and b. That means we have two present states and two next states. So we define the present state and next state using a 2-bit register or a 2-bit vector uh, that defines two vectors, one for the present states and one for the next states. और फिर जो ये states हैं इनको हम ये जो states हैं इनको हम symbols assign कर देते हैं S0, 00 को हम S0 कह देते हैं, 01 को हम S1 कह देते हैं, 10 को हम S2 कह देते हैं और 11 को हम S3 कह देते हैं. और फिर हम ये पैरामीटर स्टेटमेंट यूज करते हैं वेरीलॉग की टू डिफाइन दीज कांस्टेंट स्टेट्स एज सिंबल्स, जो कि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए हैं, राइट? तो जब हमने ये चीज़ भी कर ली तो फिर हम पहला ऑलवेज ब्लॉक लिखते हैं जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि जो ट्रांजिशन है वो पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक होगी
जो ट्रांजिशन है वो पॉजिटिव ट्रांजिशन फ्रॉम previous state to or the present state to the next state will will happen at the positive edge, और जो जो रीसेट होना है आपके सर्किट ने वो तब होना है जब नेगेटिव एज ऑफ द रीसेट इनपुट हो, और उसके लिए जो स्पेसिफिकेशन है, जो जो फंक्शनलिटी वो यहाँ पर डिस्क्राइब है। ठीक है, सो वंस वी हैव specified this, we write the next always block, जिसको हम excite करते हैं या excite करते हैं using the present states, जो कि state के वेरिएबल में है, और इनपुट्स। जब इनपुट और स्टेट में से कोई भी चीज़ चेंज हो तब तब जो है ये स्टेट मशीन ये जो भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये एग्जीक्यूट हो, राइट। और ये स्टेट मशीन में सबसे पहले होता यह है कि 4 स्टेट्स हैं तो 4 केस बनाएंगे हम, राइट। और फिर हम ये बताएंगे कि ये जब S0 है ये किस तरह फ्लो हो रही है, S0 से स्टेट कहाँ कहाँ पे फ्लो हो रही है। सो स्टेट S0 से फ्लो हो रही है S1 पे, इस एरो से अगर आप देखें, जब इनपुट 1 है। तो जब इनपुट 1 है तब स्टेट जो है इफ x in जो है जब 1 होगा तो इसका मतलब है ये इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो S1 होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई हुई है, ठीक है। और जब S0 प्रेजेंट स्टेट है और इनपुट 0 है तो स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेट भी S0 ही होनी चाहिए, तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। और फिर जब प्रेजेंट स्टेट S1 है तो उस केस में आपके पास जब इनपुट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट S3 है। तो जब S1 है प्रेजेंट स्टेट और इनपुट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट S3 होनी चाहिए, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे स्पेसिफाइड है, ठीक है। और इसी तरीके से जो अगर प्रेजेंट स्टेट S1 है और इनपुट 0 है x in, तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट है वो S0 होनी चाहिए, जो कि यहाँ से आपको इस एरो से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये जो फंक्शनैलिटी है ये भी हमने इम्प्लीमेंट कर दी इस तरीके से। तो जब हमने पहली 2 स्टेट्स के लिए जो ट्रांजिशन है वो कंप्लीट कर ली, फिर हम S2 पे जाते हैं, और S2 के ऊपर भी आप बेस्ड ऑन दिस सर्किट आप ये ट्रांजिशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से S3 बेस्ड ऑन दिस स्टेट मशीन आप S3 के लिए भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जब आपने ये स्पेसिफाई कर दिया, नाउ यू एंड दिस केस, और अब आपका ये ऑलवेज ब्लॉक जो है ये कंप्लीट हो गया है, जिसमें आप डिस्क्राइब कर रहे हैं हाउ स्टेट्स आर चेंजिंग। सो इस ब्लॉक में यू डिस्क्राइब हाउ स्टेट्स आर changing with change in input। और ये जो ऑलवेज ब्लॉक है, इस ऑलवेज ब्लॉक में आप यू स्पेसिफाई हाउ योर आउटपुट y, दिस आउटपुट y is changing with change in the states, and as you can see from the state machine, क्योंकि हम बिहेवियर इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और बिहेवियर जो है वो स्टेट मशीन, ये वाली स्टेट मशीन बताती है। तो अगर आप गौर से देखें तो सिवाय S0 के, जहाँ पे जब इनपुट जो है वो 0, यहाँ पे भी 0 है, और सॉरी आउटपुट जो है वो यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। तो दोनों पॉसिबिलिटी, आउटपुट 0 है, इसका मतलब है यू कैन स्ट्रेट अवे से कि S0 पे जो भी इनपुट हो आउटपुट 0 ही रहेगी, सही है। और बाकी सारी स्टेट्स के लिए अगर आप गौर से देखें तो S1 में जब इनपुट 1 है आउटपुट 0 है, और जब इनपुट 0 है आउटपुट 1 है। इसी तरह S2 के लिए भी अगर आप गौर से देखें तो जब इनपुट 1 है आउटपुट 0 है, और जब इनपुट 0 है
तो आउटपुट 1 है। इसी तरीके से अगेन यू सी देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट फॉर S3 एज वेल। जब इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है, और आउटपुट जब इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी तीनों स्टेट्स के लिए जब स्टेट ट्रांजिशन हो रही है तो आउटपुट जो ट्रांजिशन है वो भी इनपुट से डायरेक्टली हम बता सकते हैं यूजिंग दिस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, बिकॉज जो इनपुट है उसके बिल्कुल उसका कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन आउटपुट पे है। सही है। सो इसका मतलब है कि इन केस ऑफ S1 S2 एंड S3, अगेन दिस इज अ केस स्टेटमेंट जिसमें एक केस में डिफरेंट रिजल्ट है और बाकी तीनों केसेस में एक ही पॉसिबिलिटी है। इस वजह से इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज केसेस सेपरेटली, S1 S2 और S3 को इकट्ठा लिख दिया गया है, और इन तीनों केसेस की सूरत में जो भी इनपुट है आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन होगा, जो कि यहाँ से मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। तो इससे ये हमें जो इसकी जो फंक्शनैलिटी है, नाउ वी हैव डिस्क्राइब्ड इट यूजिंग 2 केस स्टेटमेंट्स। ठीक है। और ये जो ब्लॉक है ऑलवेज ब्लॉक, एंड दिस इज ओनली स्पेसिफाइंग द दैट के जो ट्रांजिशन है वो पॉजिटिव एज पे हो, राइट। सो now we implement the Moore model, where we have this particular example, a sequential circuit with 2 flip-flops, which means we have 2 states and some input combinational logic. Since in this case we know we do not have output combinational logic, and the output of the flip-flops are actually output of the system, तो इस केस में हमारे पास जो स्टेट मशीन है वो ये आती है, और स्टेट मशीन जो है वो इस स्टेट मशीन को एक ऑलवेज ब्लॉक के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया है यहाँ पे। और इस की डिस्क्रिप्शन या इसको पहले डिस्कस करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम इनपुट्स डिफाइन करें। इनपुट्स हमारे पास अगेन एक्स इन और क्लॉक और रीसेट है। आउटपुट अगेन वाई आउट है, और जो वाई आउट है वो बेसिकली आपका इस केस में जो जो आउटपुट स्टेट्स हैं वही आपकी वाई आउट है, यही आपकी वाई आउट है। ठीक है। तो जो स्टेट है, जो स्टेट्स हैं वो उसके लिए हमने एक वेरिएबल स्पेसिफाई किया इसमें, जिसको हम सिर्फ स्टेट कह रहे हैं इसमें। इस वेरिएबल के अंदर वी विल हैव बोथ द प्रेजेंट एंड द नेक्स्ट स्टेट्स, राइट। और जो सिंबल्स हैं ये S0 S1, क्योंकि हम प्रीवियसली साइन भी कर चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं, वो हम पहले स्टेट्स को एक सिंबल्स के तौर पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड देन वी यूज़ द ऑलवेज ब्लॉक। और इस केस में सिंस we are dealing with Moore model, so we only use one always block। ठीक है। और जो इसकी एग्जीक्यूशन है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द क्लॉक, डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव एज यूज़ कर रहे हैं या नेगेटिव एज यूज़ कर रहे हैं। तो इस केस में हम पॉजिटिव एज यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ रीसेट इनपुट भी है, तो जब नेगेटिव एज ट्रांजिशन होगी रीसेट इनपुट की, तो उस टाइम पे आपका जो सर्किट है इट शुड रीसेट। जो फंक्शनैलिटी है रीसेट की वो यहाँ डिफाइंड है। इट मीन्स व्हेन रीसेट इज 0, the state should stay 0 0, right, or the state S0, right। So जो functionality है, once we have the positive edge of the clock cycle, then this uh, state flow behavior of this logical circuit or sequential circuit will be implemented. Or in this case, uh, so if S0 is the present state and input is 1, it means the next state should be, in fact the input is 1, the next step, in fact जब input 0 है यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको नॉट कर दिया है, तो एक्स इन जब 1 होगा और उसका नॉट इसका मतलब है जब 0 होगा, तो जब एक्स इन 0 है तो उस केस में S1 जो है वो
नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी आप, ठीक है। और जब अब एस एक्स इन 1 है उस केस में S0 जो है वो आपकी नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी, और इसी तरीके से बाकी स्टेट्स भी इंप्लीमेंट हो जाएंगी जो कि यहाँ पे डिस्क्राइब्ड हैं, और आप आराम से यू कैन इजीली सी हाउ each these statement implements exactly the same thing that is given here, right? तो जब ये स्टेट ट्रांजिशन सारी केसेस हम स्पेसिफाई कर देंगे, उसके बाद वी विल असाइन द फाइनल स्टेट्स as y out, right? So so this is how we implement the Moore model, and which as you can see is much easier compared to the Mealy model, जहाँ पे सिर्फ एक always ब्लॉक आता है, और वो always ब्लॉक इट्स वेरी इजी टू सी कि वो उसको क्लॉक एक्साइट करेगा या एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरीके से सो जब जैसे पॉजिटिव क्लॉक आएगा, पॉजिटिव एज आएगा क्लॉक का, सो एनी ऑफ दीज स्टेटमेंट्स गिवन हेयर विल विल बी एग्जीक्यूटेड, और जो भी ट्रांजिशन है स्टेट की, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, जैसे ही जो भी गिवन सिचुएशन है इनपुट की, उस हिसाब से स्टेट ट्रांजिशन हो जाएगी। एंड सो इन दिस वे वी इम्प्लीमेंट दिस functionality या behavior of this Moore model uh, using one always block, right? So this is the end of this lecture. So I hope you are all safe. Take care of yourself.